Good afternoon, everyone. This is Ashvi, and you are joining Goenkan Prime TV, welcoming you with English News Bulletin. Here are some international news. Keir Starmer, who was called Superboy in his childhood, is a supporter of leftist ideas. He is also a renowned lawyer, skilled sportsperson, and music lover. He was once thinking of leaving politics and selling books, but today he has become a top man in British politics, become Britain's PM. Now some national news. Dev Prakash Madhukar, the absconding main accused in the case of 121 deaths due to stampede during satsang in Hathras, surrendered in Delhi. Supreme Court lawyer AP Singh claimed that Madhukar has been handed over to the Special Investigation Team of UP Police at 10 pm. From Sports World, the Paris Olympics will be played between 26 July and 11 August. India's best performance so far has been in Tokyo Olympics, winning 7 medals, including Neeraj Chopra's historic gold in javelin throw. More than 100 players from India have qualified for the Olympics, including 21 shooters. Now some local happenings. 4 more villages in the district have become drug-free. On Friday, SP Vikram Bhushan honored the sarpanches of these villages. The police administration claims that till now 76 villages and 4 wards of the district have become drug-free. Let's know our weather report. The weather in Sirsa today is cloudy and pleasant with strong chances of rain this afternoon with a maximum temperature of 33 degrees Celsius and minimum of 26 degrees Celsius. Some Goenka news. Miss Ruchi addressed the morning assembly emphasizing the poem Keeping Quiet and the importance of silence and self-reflection to students, highlighting the value of introspection in personal growth. Thank you. Be with us for Hindi news headlines. नमस्कार, मैं भूवी हिंदी समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बचपन में सुपर बॉय कहे जाने वाले कीर स्टारमर वाम विचारों के समर्थक हैं। वह एक प्रसिद्ध वकील, कुशल खिलाड़ी और संगीत प्रेमी भी हैं। कभी राजनीति छोड़ किताबें बेचने का सोच रहे, पर आज वे ब्रिटेन की राजनीति में शिखर पर हैं। वे ब्रिटेन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ से हुई 121 मौत के मामले में फरार मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील MP सिंह ने दावा किया कि मधुकर को रात 10 बजे यूपी पुलिस के विशेष जांच दल को सौंप दिया है। अब बारी खेल जगत की। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेले जाएंगे। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में रहा है, जिसमें भाला फेंका में नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक स्वर्ण समेत 7 पदक जीते। भारत के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जिसमें से 21 निशानेबाज हैं। आज आने कुछ स्थानीय हलचल। जिले के 4 और गांव नशा मुक्त हुए। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने इन गांवों को सरपंचों को सम्मानित किया। पुलिस प्रशासन के दावा है कि अब तक जिले के 76 गांव व 4 वार्ड नशा मुक्त हो चुके हैं। मौसम का हाल इस प्रकार है। सिरसा में आज बादल छाए रहने के साथ मौसम सुहावना रहेगा। दोपहर में बारिश की प्रबल संभावना। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुछ गोइंकन समाचार। सुश्री रुचि ने सुबह की सभा को संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को अंग्रेजी की एक कविता कीपिंग क्वाइट को समझाया तथा मौन रहने और आत्मचिंतन का महत्व पर जोर दिया तथा व्यक्तिगत विकास में आत्मनिरीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। धन्यवाद। अब खबरों का प्रसारण पंजाबी में होगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਬॉय ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ।
ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ 121 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਧੂਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ AP ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮਧੂਕਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸਮੇਤ 21 ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸਮੇਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਥਾਨਕ ਹਲਚਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਕਰਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 76 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 4 ਵਾਰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਕਨ ਨਿਊਜ਼। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕੀਪਿੰਗ ਕੁਆਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। नमस्कार। अहम् अहना अस्मि। संस्कृत समाचार अंतर्राष्ट्रीय वार्ताः। बालकाय सुपरबॉय इति उच्यमानः के स्टार्मरः वामपक्षीय विचाराणां समर्थकः अस्ति। सः प्रसिद्धः वकीलः, कुशलः क्रीडकः, सङ्गीतप्रेमी च अस्ति। सः एकदा राजनीतिं त्यक्त्वा पुस्तकविक्रयं करोति जनयति स्म, परन्तु अद्य सः ब्रिटेनस्य राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचितः भूत्वा ब्रिटिश राजनीतेः प्रकाष्ठे अस्ति। राष्ट्रीयवार्ताः। देल्ल्यां पालयितुं मुख्य अभियुक्तः देवप्रकाशः मधुकरः तत्सङ्गे दम्पदशः 121 मृत्युकारणके प्रकरणे आत्मसमर्पणं कृतवान्। सर्वोच्चन्यायालयस्य अधिक्त्वा AP सिंह महोदयः उक्तवान् यत् रात्रौ 10 वादने मधुकरः उत्तरप्रदेश विशेष अन्वेषणालये समर्पितः अस्ति। क्रीडाजगतवार अस्ति। पेरिस ओलम्पिकः 26 जुलैतः 11 अगस्त पर्यन्तं भविष्यति। भारतस्य अद्यावधि सर्वोत्तमः प्रदर्शनः टोक्यो ओलम्पिक क्रीडायाम् अभवत्, यत्र सः सम्पदकानि प्राप्तवान्, यत्र नीरज चोपड़ा महोदयस्य भालाक्षेपणस्य ऐतिहासिकं सर्वणं प्राप्तवान्। भारतस्य शतकः सः अधिकाः क्रीडकाः ओलम्पिकस्य योग्यतां प्राप्तवन्तः, येषु 21 शूटरः अपि सन्ति। स्थानीयकार्य पश्यामः। मण्डले 4 अपि ग्रामाः मादकद्रव्यमुक्ताः अभवन्। शुक्रवासरे पुलिस अधीक्षकः विक्रान्तभूषणः एतेषां ग्रामाणां सरपञ्चानां सम्मानं कृतवान्। अधुना यावत् मण्डलस्य 76 ग्रामाः 4 वार्डाः च मादकद्रव्यमुक्ताः अभवन् इति पुलिस प्रशासनस्य दावाः सन्ति। मौसमः एवम् अस्ति। अद्य सिरसानगरे मेघयुक्ताकाशेन सह मौसमः शुष्कः भविष्यति। अपराह्णे वर्षा भवितुं प्रबलः संभावना वर्तते। अधिकतम तापमानं 63 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमानं 26 डिग्री सेल्सियस। विद्यालयस्य वार्ताः। सूत्री रुचिः प्रातःसभां सम्बोधयन्ती छात्राणां समक्षं कीपिंग क्वाइट इति आङ्ग्लकाव्यं व्याख्याय मौनस्य आत्मनिरीक्षणस्य च महत्त्वे बदलं दत्तवती तथा च व्यक्तिविकासे आत्मनिरीक्षणस्य महत्त्वं प्रकाशितवती। धन्यवाद।